domain. Then we have seen some conditions for the function to be analytic. So what are those conditions? The function u, we normally replace f of z by u plus iv and z by x plus iy, and then we check for CR equations. So what are the CR equations? Ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Okay, and we have seen some problems yesterday how to show whether the function is analytic, and if it is analytic, find their derivative. So what is the formula for f dash of z in terms of the partial derivatives u and v? What is f dash of z in terms of the partial derivatives ux, vx, uy, vy? Yesterday we have used at many places to calculate f dash of z. So what is that f dash of z? Do you remember? F of z is u plus iv. So what is f dash of z? It is ux plus ivx. F of z is u plus iv. So f dash of z is ux plus ivx. Okay, so we'll do a few more problems on this analytic function. Find the constants a, b, c, d, e if f of z is analytic. Find the constants a, b, c, d, e if f of z equal to ax cube plus bx square plus 3x square plus cy square plus x plus I into dx square y minus 2y cube plus exy plus y. So here we have to find the values of the constants if the function is analytic. So here you are given that the function is analytic, and we know that if the function is analytic, then the u and v will satisfy the CR equations. Okay, so here we are given that the function is analytic. We have to calculate the values of a, b, c, d, and e. Okay, so we are given function is analytic, which means that if the function is analytic, we know that it satisfies the CR equation. And we normally replace f of z by u plus iv. So I have written u plus iv is equal to the given problem. Now write u and v. So we get u and v by equating real and imaginary parts on both the sides. So equating the real part, I will get u, and equating the imaginary part, we can get v. So what is u here? Ax cube plus bxy square plus 3x square plus cy square plus x. Similarly, v is the imaginary part on the right hand side. Okay. So same way, since the function is analytic, we require the partial derivatives ux, uy, vx, vy. So we will calculate now ux, uy, vx, vy. So first we'll calculate ux, differentiating u partially with respect to x. Y will remain as a constant since we are differentiating u partially with respect to x. So what is ux then? Ax cube अगर हमने differentiate किया तो I will get 3ax square plus x is variable, y is a constant, so I'll get by square plus 6x plus 1. Similarly, uy will be equal to differentiating u partially with respect to y. So ax cube is a constant, bxy square ka derivative 2bxy or y square ka derivative 2y. This is a constant, cy square ka derivative 2cy or x ka derivative 0. In a similar way, calculating vx and vy. So vx will be equal to 2dxy plus ey. Just check, okay, if the partial derivatives are wrong anywhere, let me know that. Similarly, vy, dx square minus 6y square plus ex plus 1. Okay, are they okay? Partial derivatives with respect to x and y. u और v को हमने x और y से differentiate किया है. तो u को partially अगर x से किया है तो उसको हम ux लिखते हैं और वैसे ही uy, vx and vy. Now here it is given that function is analytic. We need not prove that the function is analytic.
It is given that find the constants if f of z is analytic. Function is already analytic. So we can make use of the CR equations. So what are the CR equations then? Since the function is analytic, the first CR equation is ux equal to vy and uy is equal to minus vx. Okay, since the function is analytic, we can make use of ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Okay, so what is ux and uy we have got? We have to substitute it over here. So I am taking the first CR equation, ux is equal to vy. So I'll substitute it for ux and vy. And ux is equal to 3ax square plus by square plus 6x plus 1. Similarly, vy we had got in the previous slide, dx square minus 6y square plus ex plus 1. Okay? So we have written ux का function, vy का function. Now our aim is to get the values. तो हमें क्या करना है? Compare the coefficients of the like terms. Compare the coefficients of the like terms. मतलब x square का coefficient दोनों साइड में compare करना है. Similarly y square, similarly x और फिर constant. So if I compare the coefficients of the like terms, what is the first equation I will get? What is the coefficient of x square on both the sides? I want to compare the coefficient of x square. So x square, no, it is 3a. ठीक है, खाली x square का. X square is 3a is equal to d. Only x square coefficient I'm comparing it. Correct. 3a is equal to d. Now y square का coefficient. Yes, y square coefficient b will be equal to minus 6. ठीक है. Then x का coefficient. E is equal to 6. Correct. E is equal to 6. That's it. One is same on both the sides, so we need not write that. Okay? So we have got three equations. 3a is equal to d, b equal to minus 6, e equal to 6. So we've got two constants now, b and e. Now use the second CR equation, uy is equal to minus vx. Okay? Using the second CR equation, so I'm just equating the coefficients of like terms in the first CR equation. जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, x है और कांस्टेंट है, तो दोनों साइड में x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को साथ में लिख रहे, इक्वल टू करके लिख रहे हैं. सिमिलरली y स्क्वायर, सिमिलरली x का कोएफिशिएंट and one can be cancelled on both the sides. Similarly, if I take the second CR equation, uy is equal to minus vx. So 2bxy plus 2cy is equal to minus of 2dxy plus ey. Again compare the coefficients of the like terms. यहाँ पे variables x, y ऐसे variables है, बाकी सब जो है वो constant है. तो यहाँ पे दो variables, एक तो x, y है, यहाँ पे y है. तो if I compare the coefficients again, I will get x, y का क्या होगा coefficient? 2b is equal to minus 2d. Yes, 2b is equal to minus 2d, or I can write b is equal to minus d. Okay. Similarly, अगर y का कोएफिशिएंट हमने इक्वेट किया, तो I will get 2c equal to, now since b value is 6 from the previous one, right? I think b value was 6. We didn't get b. One second, I think I've written something wrong. B is 6, I think. No? B is 6, so D is equal. B is minus 6, so D is equal to 6. Correct. We got B is equal to 6 in the previous step. So D will become minus 6. Similarly, 2C is equal to minus E. Already C value we have it. Already C value we have. So we can 2C is equal to minus E and E is equal to 6. So 2C is equal to minus 6. So C is equal to minus 3. So what are the values we have got? A equal to 2. B equal to minus 6, C equal to minus 3, D equal to 6, and E equal to 6. Okay? These are the values of A, B, C, D, and E. Clear? So most often we find these type of problems in the compulsory question. Either they will ask you to prove that the function is analytic, or they will ask you to find the values of the constants if the functions are analytic.
We can expect these type of questions under the compulsory 5 marks का जो question होगा उसमें we can expect the first part analytic का जो part है, we can think of these type of questions. Clear? तो हमने क्या करना है यहाँ पे, you are given that the function is analytic. अगर function analytic है तो CR equation satisfy होता है, तो CR equations को satisfy करने के बाद जो भी values ABCD की मिली है that we have calculated it. And we have calculated the equations by comparing the coefficients of like terms. Use both the equations, both the CR equations, and substitute the values of, substitute for ux, uy, vx, vy, and then compare the coefficients and get the values. Okay? One. Okay, 3a is equal to d. I think we didn't get the value of a, right? A is equal to 2. पूरे इक्वेशन को साथ में लिख के we have to just compare the coefficients and get the values of a, b, all the constants here. Okay, so take the next problem. Find k such that half log x square plus y square plus I tan inverse of kx by y is analytic. Find k such that the function, some function is given, is analytic. So whatever is the function given, I can take this function as f of z, okay, or I can take it as u plus iv. Whatever is the function given, either we can take it as f of z or we can take it as u plus iv, because we know that f of z is equal to u plus iv. So u plus iv is equal to half log x square plus y square plus I into tan inverse of kx by y. Same way, since it is given function is analytic, we have to make use of the CR equations. So for that, write u, v, ux, uy, vx, vy. Use the CR equations and get the value of k. The first step is equating real and imaginary part. So u will be equal to the real part, which is equal to half log x square plus y square, and v is equal to tan inverse of kx by y. U is equal to the real part, V is equal to the imaginary part. Now calculate ux. U को x से partially differentiate करना है, तो y will remain as a constant. So what is ux then? Log का derivative is 1 upon. So I will write ux is equal to log का derivative is 1 upon x square plus y square into the derivative of x square plus y square with respect to x, that is 2x. ठीक है? तो log का derivative is 1 upon and into the derivative of x square plus y square is 2x with respect to x. 2 and 2 will get cancelled. I will get x upon x square plus y square. Similarly, differentiate u partially with respect to y. Differentiating u partially with respect to y. Same way I will get, only thing, the derivative of x square plus y square will become 2y. ठीक है, तो ux is x upon x square plus y square and uy is equal to y upon x square plus y square. So next we have v. Now calculate vx and vy. Tan inverse का derivative क्या है? Already we have used in inverse function also. Derivative of tan inverse will be 1 upon 1 plus x square. Tan inverse का derivative होता है 1 upon 1. Tan inverse of x का derivative होता है 1 upon 1 plus x square. तो यहाँ पे tan inverse of kx by y है, तो it will be 1 upon
1 plus kx by y the whole square into the derivative of kx by y with respect to x. मतलब y is a constant. ठीक है, kx by y में k by y constant है, derivative of x हो जाएगा 1, तो I will get only k by y here. ठीक है, हमें kx by y को x से डिफरेंशिएट करना है, तो k और y दोनों कांस्टेंट है, खाली x इज अ वेरिएबल, तो यहाँ पे हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 करके k by y. नाउ टेक द एलसीएम, इट इज k स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो आई विल गेट y स्क्वायर plus k square x square, and this y square will go to the numerator. So this y square and y will get cancelled. You will have only one y in the numerator. ठीक है, is it okay vx function? ठीक है, वैल्यू yes. Similarly vy का भी फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, खाली डेरिवेटिव ऑफ kx by y में चेंज आ जाएगा. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ kx by y विथ रिस्पेक्ट टू y? हमने यहाँ पे kx by y को x से डिफरेंशिएट करने के बाद ये ब्रैकेट में लिखा है. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ kx by y विथ रिस्पेक्ट टू y? x is a constant, k is a constant, तो kx is a constant. So 1 upon y का क्या आएगा? 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वेयर, है ना. k इज अ कांस्टेंट, x इज अ कांस्टेंट, तो 1 अपॉन वाई का जो डेरिवेटिव है वो हो जाते हैं -1 अपॉन वाई स्क्वेयर. तो आई विल गेट द आंसर एज -kx अपॉन वाई स्क्वेयर. यहाँ पे y था, यहाँ पे वाई स्क्वेयर. Numerator -kx will come, denominator y square will come for that function. Again take the LCM. So y square plus k square x square whole upon y square, that y square will go to the numerator. So y square will get cancelled. I will get y minus kx upon y square plus k square x square. Same function, खाली यहाँ पे minus kx आएगा. That's what Yash told, I think. Numerator minus kx will come, yes. Denominator part is same after simplification. ठीक है? Now equate or use the CR equation. So take the first CR equation. If because only one constant is to be calculated, k, so we can make use of any one of the CR equations to get the value of k. So I think I've used the first one. Ux is equal to vy. Using ux is equal to vy, I've calculated the value for k. So क्या हो जाएगा? First, second one is not required. You can use any one. K value is equal to -1. Okay. So now I've got ux as x upon x square plus y square and vy as k minus kx upon. If I compare both, अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ये दोनों इक्वल रहना है तो x भी है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है. अगर दोनों सेम है तो we have to have the k value should be equal to -1. अगर k की वैल्यू -1 है तो ही ये दोनों इक्वल हो जाएगा. तो k value is equal to -1. That is the value of k. Yes, correct. ठीक है? So these are the types of problems where yesterday what we have done is prove that the function is analytic. So we have calculated ux, uy, vx, vy, and then we have seen whether ux is equal to vy and uy is equal to -vx. But here the function is given as analytic. You are asked to calculate the values of the constants. Clear with this part? ठीक है? अगर दिया है तो हमें कैसे निकालने हैं? Next type of problems. बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ये वाले, बट देन जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ज्यादा कुछ लिखने को ज्यादा नहीं है उसमें, फिर भी prove that an analytic function with its derivative 0 is constant. Prove that an analytic function with its derivative 0 is constant.
मतलब क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, मुझे बताओ इतना. प्रूव दैट एंड अगर मैंने एफ ऑफ जेड को एनालिटिक फंक्शन लिया, ठीक है, सपोज मैंने एफ ऑफ जेड को एनालिटिक फंक्शन लिया, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड. ये जो सेंटेंस दिया है उसमें से हमें क्या समझ रहा है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी प्रूव्ड. प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विथ इट्स डेरिवेटिव जीरो इज कांस्टेंट. जस्ट टेल मी व्हाट इज गिवन नाउ. पहले व्हाट इज गिवन यू, लेट मी जस्ट राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ. फंक्शन एनालिटिक है उतना दिया है. यस, फंक्शन इज एनालिटिक. देन व्हाट एल्स इज गिवन. अ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है. मैं आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द, ओके दैट इज ट्रू, उत्तरा यू आर राइट. तो मैंने खाली इतना पूछा है कि व्हाट इज गिवन. तो फंक्शन एनालिटिक है इतना दिया है, और क्या दिया है, डेरिवेटिव जीरो है दिया हुआ है, मतलब एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो भी दिया हुआ है. ठीक है, सो टू कंडीशंस आर गिवन हियर. द फंक्शन इज एनालिटिक and f dash of z equal to 0. Prove that an analytic function with its derivative 0 is constant. और हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है. दैट इज द प्रोसीजर. हमको दिया हुआ है कि द फंक्शन इज एनालिटिक एंड एफ डैश ऑफ जेड 0, और हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ जेड कांस्टेंट. तो फर्स्ट स्टेप अभी विल टेक, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन. will f of z is equal to u plus iv be an analytic function. अगर एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होता है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं. तो आई विल राइट यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. ठीक है, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन. तो हमने पहले क्या किया है, एफ ऑफ जेड को एनालिटिक ले लिया है. अगर एनालिटिक है तो वी हैव टू कंडीशंस, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. व्हाट एल्स इज गिवन, एफ डैश ऑफ जेड इज 0. We know f dash of z, if f of z is u plus iv, f dash of z is ux plus ivx. We have done this part yesterday. F dash of z is ux plus ivx. We are given that f dash of z is equal to 0. मतलब ux plus ivx equal to 0 हो गया. Now we are having left hand side complex number, right hand side 0, which means that अगर दोनों what is that? When can you say that two complex numbers are equal? Only if the real part is equal and imaginary parts are equal. So if I equate, I will get ux equal to 0 and vx also equal to 0. है ना? Left hand side you are having a complex number, right hand side you are having a number. So if I equate real and imaginary part, ux equal to 0, vx equal to 0. Okay? So ux is 0, vx is 0. Now since the function is analytic, what can you say about uy and vy? We have got from the condition f dash of z equal to 0, ux equal to 0 and vx equal to 0. Now since the function is analytic, it satisfies the CR equation. So what can you say about uy and vy? They are also equal to 0. Yes. So I will get uy from the CR equations. I will get uy is also 0, vy is also 0. So now you are having ux 0, uy 0. एक फंक्शन है उसका x डेरिवेटिव भी 0 है, y डेरिवेटिव भी 0 है. तो व्हाट कैन यू से अबाउट दैट फंक्शन. एक जो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट फंक्शन का. यस, इट शुड बी अ कांस्टेंट, करेक्ट. तो व्हेन ux इज 0, uy इज 0, मतलब derivative with respect to x is 0, derivative is 0. So the function has to be equal to a constant. Similarly, vx 0, vy 0, v is equal to constant. But we know that f of z is equal to u plus iv. Therefore, u is constant, v is constant. So f of z will also be a constant function. ठीक है, clear this part? तो हमें पूरे प्रॉब्लम को खाली देखना है क्या दिया है और क्या प्रूव करना है. Accordingly, you have to proceed further. अगर एनालिटिक फंक्शन दिया है तो सी आर इक्वेशन यूज करना है, और अगर एफ डैश ऑफ जेड दिया है तो एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला यूज करना है, एंड देन सी व्हाट यू गेट टू गेट द फाइनल आंसर. एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम?
ठीक है, ओके। सिमिलर प्रॉब्लम बट विद डिफरेंट कंडीशंस। तो आइडेंटिफाई करो क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। आई थिंक वंस दैट आस्क दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर 6 मार्क्स, ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन दैट आस्क फॉर 6 मार्क्स इन वन क्वेश्चन पेपर। If f of z is analytic and mod f of z is constant, prove that f of z is constant। तो फिर से हमें प्रूव करना है कि u plus iv is a constant। तो हमें प्रूव करना है u and v constant है। u and v constant कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो वी हैव टू जस्ट शो दैट द फंक्शन इज कांस्टेंट। तो क्या दिया है? अगेन f of z एनालिटिक दिया है और mod f of z is constant। Now, if I take f of z to be equal to u plus iv, ठीक है, what is the modulus of any complex number? If z is equal to x plus iy, then what is modulus of x plus iy? Modulus of x plus iy is square root of u square plus v square mod. It is not bar. It is not conjugate. Okay, उत्तरा, it is mod f of z। mod का मतलब होता है modulus of that complex number, where we write r square is equal to root of x square plus y square. That is the modulus. U minus iv is the conjugate. Okay, that is denoted by what is that? Bar, z bar। here mod का है। ओके, मॉड एफ ऑफ जेड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आई वी। यू एंड वी आर रियल नंबर। सो मॉड एफ, अगर अगेन अगेन आई विल यूज वन कंडीशन। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो आई हैव टेकन एज इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट मॉड एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। आई हैव टेकन दैट कांस्टेंट टू बी इक्वल टू सी। Mod f of z equal to c. So now we have to write what is mod f of z. Now mod f of z is equal to square root of u square plus v square. Square root of any complex number, that is mod of any complex number is square root of real part the whole square plus imaginary part the whole square. तो यहाँ पे mod of f of z पूछा है and we have taken f of z is equal to u plus iv. तो mod of u square plus v square is equal to c। ठीक है, एफ ऑफ जेड। अगर मैंने ये स्क्वायर रूट रिमूव किया तो आई विल गेट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी हैव टू गेट यू एक्स एंड यू वाई या यू एक्स एंड वी एक्स, वट एवर इज दैट। वी हैव टू get these partial derivatives because already we have some conditions in terms of partial derivatives. Now try to get ux, uy, vx, vy from here also. So how to get that? From u square, how will you get, when will you get ux and uy? From u square, अगर हमें u square से ux निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। u से अगर ux निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करना है। v से अगर vx चाहिए तो हमें डिफरेंशिएट करना है। तो what we will do is differentiate this whole equation 2 with respect to x पहले। ठीक है, so we will differentiate equation 2 with respect to x। तो u square का डेरिवेटिव क्या होगा? सपोज y स्क्वायर फंक्शन है तो हम y स्क्वायर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मली? व्हेन यू आर हैविंग dy by dx वाले टर्म्स इक्वेशंस, अगर y स्क्वायर दिया है तो हम नॉर्मली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? y square के जगह हम लिखते हैं 2y into dy by dx। Not in the case of partial I'm saying, but 2y into du by, yes, 2y into dy by dx। In a same way, अगर u square को डिफरेंशिएट करना है तो I will get 2u into dou u by dou x, that is denoted by u। We are differentiating partially now। We are differentiating partially with respect to x। Differentiating equation 2 partially with respect to x. Okay, it's partial differentiation। So what we will get? 2u ux plus 2v vx equal to 0। ठीक है,
u square का डेरिवेटिव 2u into the derivative of u with respect to x, that will be ux, plus v square का 2v into derivative of v with respect to x will be vx. ठीक है, वैसे ही हमें y से डिफरेंशिएट करना है. Same way, differentiating equation 2 with respect to y. So 2u uy plus 2v vy is equal to 0. ठीक है, we have got fourth equation. Now, our aim is to solve the equations 3 and 4. Our aim is to solve, because already we have some conditions for CR equations. Our aim is to get the values of 3 and 4. But if we see in 3 and 4, we are having now 4 variables, like, because हमारे पास जो condition है वो ux, uy, vx, vy का condition दिया हुआ है. तो we will try to solve for these partial derivatives. तो यहाँ पे ux है, vx है, uy है, vy है. तो we are having 4 variables like. तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में we will use CR equations and reduce this to ux and vx. ठीक है, हमें ux और vx की वैल्यू चाहिए, because once I get ux and vx, then I can calculate u and v. Okay, so what हम लोग क्या करेंगे, fourth equation में we will make use of the CR equation and convert this uy and vy to ux and vx. तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, या तो हमें क्या करना है, uy. Now what is uy? uy is equal to minus vx. तो ये जो uy है उसको हम माइनस vx पुट करेंगे और vx के नीचे लिखेंगे. वैसे ही vy is equal to ux है, तो vy को हम ux पुट करेंगे और ये इक्वेशन के नीचे लिखेंगे. तो दिस इक्वेशन एज इट इज, आफ्टर कैंसिलिंग 2, आई हैव रिटन थर्ड इक्वेशन एज इट इज. फोर्थ इक्वेशन में हमने क्या किया है, uy के बदले माइनस vx, तो मैंने वो यहाँ पे लिखा है. ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस vx यहाँ पे लिख दिया है. यहाँ पे uy था, सॉरी vy था, बट vy इज इक्वल टू ux. तो अगर vy को मैंने ux पुट किया तो वो ux के नीचे में आ जाए, नीचे वाले इसमें आ जाएगा. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. Solve these two equations for ux and vx, not for u and v. Okay, we are solving for ux and vx. Okay, so just tell me what will be the how to solve these equations 5 and 6. Can we solve it simultaneously? We have to solve for ux and vx. So we are going to solve this simultaneously. तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, वी आर हैविंग कांस्टेंट्स हियर, तो वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ कैल्सी. तो हम नॉर्मली एलिमिनेशन कैसे करते हैं, एक वेरिएबल को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना. तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे vx का प्लस v है, vx का माइनस u है, तो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय u, 6 बाय v, एंड देन कैंसिल दीज टू टर्म्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ux. हमारा एम है ux, uy, vx, vy की वैल्यू निकालनी है, ताकि वी विल गेट दैट f of z equal to u plus iv to be a constant. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली दीज टू इक्वेशंस. तो क्या किया है मैंने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय u टू कैंसिल दिस vx. आई एम डूइंग इट, इट्स एन व्हाट इज दैट, you say elimination method. Multiply equation 5 by u and 6 by v. तो ये क्या हो जाएगा, I will get u square plus uv into vx equal to 0. इसको अगर v से मल्टीप्लाई किया तो v square ux minus uv vx equal to 0. ठीक है, now we have to solve these two equations. तो क्या होगा, second term will get cancelled. These two terms I can cancel here. What will remain? u square plus v square into x equal to 0 आ जाएगा. Okay, u square plus v square into ux equal to 0 आ गया. u square plus v square की वैल्यू है c square ux equal to 0.
So I can say that ux is equal to 0. Okay, ux is equal to 0. Now substituting ux equal to 0 in this, what is the value for vx then? If I substitute ux equal to 0, then what is the value of vx? Is it also equal to 0? It is also equal to 0. So I have got ux, substituting ux, I'll get vx is also equal to 0. So when ux, vx are 0, from CR equation, uy, vy are also 0. So as in the previous problem, I can say that when ux is 0, uy is 0, I will get u to be equal to a constant. Similarly, vx equal to 0, vy equal to 0, I will get v to be equal to a constant. है ना? So Vx equal to 0. So in the next step, since Ux and Vy from CR equations, they are also equal to 0. Ux, Uy 0, U is constant. Vx, Vy 0, V is constant. Therefore, f of z is equal to constant. ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अगर एफ ऑफ जेड को कांस्टेंट प्रूव करना है, मतलब यू और वी को कांस्टेंट प्रूव करना है. यू और वी कांस्टेंट कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई 0 होता है. सो आर एम इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ यू एक्स यू वाई and vx vy, so that we can write easily that u is a constant and v is a constant. डेरिवेटिव का पार्ट, इसके लिए हमने u and v को सॉल्व नहीं किया, हम डायरेक्टली ux uy को सॉल्व कर दिया है. ठीक है. Next question. Previous slide, 1 second. ठीक है. ux uy 0, vx vy 0, therefore u and v are constants. You get f of z is equal to. Okay. So try this part. If f of z is analytic and if the amplitude of f of z is constant. Now amplitude is same as your argument. Okay, what we have done, modulus and argument in semester 1 under complex numbers. Amplitude or argument both means the same. So f of z is analytic. तो दो कंडीशंस दी हुई हैं, f of z एनालिटिक भी है और एम्पलीट्यूड ऑफ f of z और आर्ग्यूमेंट ऑफ f of z इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. Prove that f of z is constant. Prove that f of z is constant. ठीक है. तो वैसे हम लोग जो दिया है पहले लिख लेते हैं हम लोग. तो f of z एनालिटिक दिया हुआ है. So I've written let f of z be equal to u plus iv be an analytic function. So once f of z is analytic, then we have the CR equation. I told you the whole chapter deals with CR equations only. So when I write f of z is an analytic function, then the CR equations are satisfied. Okay, next condition क्या दिया है? Amplitude. So I've just given the formula for argument. If z is equal to x plus iy, then argument of z is tan inverse of y by x. Remember this formula? We have done in this De Moivre's theorem we had applied. Argument of any complex number is tan inverse of y by x, provided this is in the first quadrant. If you have the different quadrants, then the value of the argument changes. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिया है? Amplitude of f of z. Now amplitude of f of z is same as argument of f of z. तो यहाँ पे f of z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है u plus iv. तो u plus iv का आर्ग्यूमेंट होगा tan inverse of v by v is equal to constant दिया हुआ है. ठीक है. तो we are starting from the given conditions. सबसे पहले एनालिटिक का कंडीशन लिखना है,
फिर एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट का कंडीशन लिखना है. तो आई कैन सिंप्लीफाई दिस, टेक tan to the other side. तो आई विल गेट v by u is equal to tan c. फिर से वी वांट द वैल्यूज ऑफ ux एंड vx, बिकॉज हमें क्या फिर से प्रूव करना है, f ऑफ z इज कांस्टेंट. अगर f ऑफ z को कांस्टेंट प्रूव करना है तो u और v कांस्टेंट होना चाहिए. एंड u एंड v कांस्टेंट कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y जीरो होंगे. तो आर एम इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स ux, uy, vx एंड vy. तो हम लोग क्या करेंगे, v बाई यू इज इक्वल टू tan c ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. Now here again try to get ux, uy, vx, vy from equation 2, or again differentiating equation 2 with respect to x, you will get one equation with respect to y, the second equation, and then solving for ux and vx as in the previous problem. Okay, तो इसको कैसे differentiate करना है with respect to x? Differentiating v by u is equal to tan c. Remember c is a constant, so tan c is also a constant. Derivative उसका zero हो जाएगा. Now v by u को हमें u by v मेथड अप्लाई करना है और उसका दर्शना प्रीवियस स्लाइड. ओके, मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी हैं खाली, ठीक है. एनालिटिक लिखा है, सीआर इक्वेशंस लिखे हैं, एम्पलीट्यूड का मैंने खाली फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, जो एक्स और वाई में था हमारा, उसको मैंने यू और वी में कन्वर्ट किया है, ठीक है. ओके, उसके बाद मैंने tan को वो साइड ले लिया है, तो v by u is equal to tan c. Now differentiate equation 2 with respect to x. Differentiate equation 2 with respect to x. u by v मेथड अप्लाई करना है, तो क्या होगा, what will be the numerator? पहला टर्म क्या आता है, डिनोमिनेटर into the derivative of numerator. तो हम लोग लिखेंगे u into derivative of the numerator with respect to x, तो vx, minus u into derivative of denominator with respect to x upon denominator square. ठीक है, u by v क्या होता है, v du minus u dv upon v square, मतलब denominator into the derivative of numerator minus numerator into the derivative of denominator upon denominator square. So now here I'm differentiating with respect to x, so only the vx or ux part will come. Similarly with respect to y करना है, same function आ जाएगा, x के बदले y. Okay, differentiating equations to tan c is a constant, so the answer will be equal to 0, or the derivative part will be equal to 0 for tan c. I think again I can cross multiply this equation 3 and 4. So I will get the equation as uvx minus vux equal to 0. Similarly, I will get uvy minus vuy equal to 0. So remember हमारा एम क्या है, हमको ux vx की दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल, दो फंक्शंस की, either ux vx or uy vy. So we are calculating the values of ux and vx. तो फिर से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा CR इक्वेशंस यूज करके. We have to convert uy and vy to ux and vx using the CR equations. Solve these two equations simultaneously and get the values for ux and vx. जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया वैसे ही यहाँ पे भी करना है. ठीक है, so next will be little bit of theoretical part you can say here. CR equation
I'll get these two equations. After replacing Vy by Ux, I have written below Ux. Uy by minus Vx, I have written below Vx. And then multiply equation 5 by u. The same thing we have to again solve. Same equation as in the previous problem we will get. Multiplying equation 5 by u, 6 by v. So I'll get u square minus uv. इसको v से मल्टीप्लाई किया तो v square plus uv. फिर से we have to cancel these two again. So cancel these two and then add both the. Adding both, I will get u square plus v square into vx is equal to 0 or vx is equal to 0. Similarly, substituting vx equal to 0 in any one of these equations, we will get ux also equal to 0. Substituting in that, I'll get ux also equal to 0. The same way, if uy is 0, vy is 0 from CR equations. Since ux 0, uy 0, u is a constant, vx 0. This is the same thing as the previous problem. F of z is equal to u plus iv, which is a constant. ठीक है? The next one. If f of z and f of z whole bar. Remember, whole अगर ऊपर है तो फिर that is conjugate. If it is mod, then it is root of x square plus y square. F of z and f of z the whole bar is analytic. Prove that f of z is analytic. So write the conditions now. F of z analytic क्या मिलेगा? F of z whole bar analytic तो क्या मिलेगा हमको condition? Analytic means CR equations. ठीक है? U plus IV का CR equation लिखना है और U minus IV का CR equation लिखना है. F of z is equal to U plus IV. Analytic है तो CR equation. ठीक है? F of z the whole bar क्या हो जाएगा? U minus IV. Conjugate है. F of z the whole bar is U minus IV. तो U minus IV analytic है तो can you tell me what will be the CR equation when U minus IV अगर प्लस है यहाँ पे U और V पॉजिटिव है तो हम लिखते हैं ux इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx. तो यहाँ पे U पॉजिटिव है, V नेगेटिव है. तो हाउ टू राइट द CR इक्वेशंस? जस्ट टेल मी दैट. क्या होंगे CR इक्वेशंस हियर फॉर द सेकंड केस? क्योंकि f of z द होल बार इज आल्सो एनालिटिक. U अगर U प्लस IV है तो हम कैसे लिखते हैं? ux है, vy है, uy है, माइनस vx है. तो अगर u माइनस IV है तो हम कैसे लिखेंगे? ux इज इक्वल टू माइनस vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस vy, है ना? तो द CR इक्वेशन अगर u और v पॉजिटिव है तो हम ऐसा लिखते हैं. यहाँ पे v नेगेटिव है तो अगर v नेगेटिव हो गया तो दिस इज रॉन्ग आई हैव रिटन, राइट? सेम लिख दिया मैंने.
One second, one second. What will be that? Ux is equal to minus Vy, correct? And Uy is equal to Vx. Okay, Ux is equal to minus Vy and Uy is equal to Vx, correct? So we have got two equations. Now from these two equations, how to get Ux is 0, Uy is 0? We have got two equations now. From these two equations, can you show Ux is 0, Uy is 0? Or will you show that Ux is 0 from equations 1 and 2? अगर ux मैंने लिया, yes, अगर ux is equal to vy, ठीक है, ux is equal to vy, here ux is equal to vy, here ux is equal to minus vy. अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो what I will get, 2ux is equal to 0, 2ux is equal to 0 और ux is equal to 0. Similarly, अगर मैंने uy को ऐड किया दोनों इक्वेशंस में तो 2uy equal to 0, so I will get uy equal to 0. So from that ux 0, uy 0, u will be a constant. ठीक है. Similarly, अगर हमें v को प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, ताकि we will get uy vy equal to 0 और यहाँ पे भी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं, ऐड करेंगे तो we will get the answer Vx equal to 0. Ux is equal to 0. 2uy is also equal to 0. और subtract करेंगे तो I will get Vx equal to 0, Vy equal to 0. So V is equal to a constant. Actually, U is also equal to a constant, है ना? Ux 0, Uy 0. So U is also equal to a constant. But the main thing is only this equation. Main thing is only equation 1 and 2. दोनों को ऐड करना है, ux और uy निकालना है. दोनों को ऐड किया तो ux is 0, uy is 0, u is a constant. अगर अभी हमने उल्टा साइड लेना है, vy equal to ux, vy is equal to minus ux, तो फिर से ऐड कर दो, vy equal to 0, again vx is also equal to 0. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग की जरूरत नहीं है ना एक्चुअली. Adding also will give you. Okay, subtracting means 1 minus 2. Okay. ठीक है. I'll just try to complete this also, otherwise I'll take it in the. Find the value of z for which the following functions are not analytic. Find the value of z for which the following functions are not analytic. Okay, not analytic का एक मीनिंग क्या होता है? CR equations are not satisfied. The other meaning is the derivative does not exist. Previous slide. Otherwise, next lecture we can do that type of questions, I think. We'll wind up with this question, it's okay.
So we'll do it in the next lecture, the next type of questions. It's almost time now. So any doubt in today's topic? No? Okay.